सो आज आमी शिकया फर्स्ट वन प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग हायगन्स प्रिंसिपल. आमकां खबर आसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितें आसता, एंगल ऑफ इन्सिडन्स इक्वल टू कितें आसता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो आमकां हे प्रूफ करपा जाय I इक्वल टू आर, I इक्वल टू आर. आता लेट 1, 2 बी दी इन्सिडंट रेस. पळय 1 आनी 2 कितें इन्सिडंट रेस एंड 1 डॅश एंड 2 डॅश आर रिफ्लेक्टेड रेस. 1 डॅश आनी 2 डॅश कितें रिफ्लेक्टेड रेस. इफ v इज दी वेलोसिटी ऑफ लायट, म्हाका सांग इन्सिडंट रेसाची वेलोसिटी कितें v, रिफ्लेक्टेड रेसाची वेलोसिटी बी कितें आसतले v आसतले. कळ्ळें. t इज दी टाइम टेकन बाय लायट टू गो फ्रॉम b टू c. आता म्हाका सपोज b टू c वचपा जाय, कळ्ळें, एक्स्ट्रा डिस्टन्स न्हू b टू c. b टू c वचपा लागून कितले टाइम लागतले, t टाइम लागतले. आनी a टू d वचपा लागून कितले टाइम लागतले, t टाइम लागतले. कळ्ळें. सो b टू c वचपा लागून कितले टाइम लागता, t टाइम लागता. आनी a टू d वचपा लागून कितले टाइम लागता, t टाइम लागता. आता हो कितें नॉर्मल आनी हो कितें नॉर्मल. म्हाका सांग हो कितें आसतलो एंगल ऑफ इन्सिडन्स. हो एंगल ऑफ इन्सिडन्स I, जाल्यार हो कितें आसतलो एंगल ऑफ इन्सिडन्स I. हो एंगल I जाल्यार हो एंगल कितें I. हो एंगल कितें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हो एंगल R जाल्यार हो एंगल कितें आसतलो R. हो I जाल्यार हो कितें I. हो R जाल्यार हो कितें R. आतां पळय इन्सिडंट रेसा लागून हे कितें पॅरलल रेस ऑफ लायट न्हू. सो इन्सिडंट लायट्सा लागून वेवफ्रंट कितें आसतले, प्लेन वेवफ्रंट कितें आसतले AB. रिफ्लेक्टेड रेस ऑफ लायटा लागून प्लेन वेवफ्रंट कितें आसतले DC. AB कितें इन्सिडंट वेवफ्रंट आनी DC कितें रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. हांगा बरयला बी पळय AB कितें इन्सिडंट वेवफ्रंट आनी DC कितें रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट. आता हे दोन्ही, हो लायट खंय स्ट्रायक करता, हे सर्फेसाचेर स्ट्रायक करता. हो सर्फेस कितें रिफ्लेक्टिंग सर्फेस. आमकां खबर आसा वी नो स्पीड इक्वल टू कितें आसता, डिस्टन्स अपॉन टायम. सो आमी कितें बरोवंक शकता, द टायम इक्वल टू कितें डिस्टन्स अपॉन स्पीड. आता फॉर इन्सिडंट रेस म्हाका सांग डिस्टन्स कितें BC, एक्स्ट्रा डिस्टन्स कितें BC आनी स्पीड कितें v. सो BC अपॉन v हो कितें आसतलो इक्वेशन 1. आता फॉर रिफ्लेक्टेड रेस म्हाका सांग डिस्टन्स कितें, फॉर रिफ्लेक्टेड रेस डिस्टन्स कितें AD आनी स्पीड कितें v. सो t इक्वल टू कितें AD अपॉन v हो कितें इक्वेशन 2. आता आमी कितें करतले, दोन्ही इक्वेशनाक कितें करतले इक्वेट करतले. सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. दोन्ही इक्वेशन इक्वेट केल्यार आमकां कितें मेळटले BC अपॉन v इक्वल टू AD अपॉन v. आतां कितें जातले v आनी v कितें जातले कॅन्सल. सो BC ची व्हॅल्यू कितें येतले BC इक्वल टू AD हो कितें आसतलो इक्वेशन 3. आता दोन ट्रायंगल दिसता पळय आमकां ABC आनी कितें ADC. आता फर्स्ट ट्रायंगल ऑब्जर्व करया. इन ट्रायंगल ABC A B आनी C हो एंगल कितें I, हो एंगल कितें 90 डिग्री. हो कितें आसतलो एडजसेंट, हो कितें आसतलो अपोजिट आनी हो कितें आसतलो हायपोटेनियस. आनी आमकां खबर आसा साइन थीटा कितें आसता अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. सो साइन I कितें अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट कितें BC, हायपोटेनियस कितें AC. कळ्ळें. आतां हो कितें जातलो AC हांगा वयतलो. सो BC ची व्हॅल्यू कितें मेळटले AC साइन I. इन ट्रायंगल ADC हो कितें अपोजिट, हो कितें एडजसेंट आनी हो कितें हायपोटेनियस. हो कितें आसतलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज R आनी हो एंगल कितें 90 डिग्री. आमकां खबर आसतलें साइन R कितें आसतलो अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट कोण AD, हायपोटेनियस कोण AC. AC हांगा वयतलो सारकें. सो AD ची व्हॅल्यू कितें मेळटले AC साइन R. आता फ्रॉम इक्वेशन 3 वी नो BC इक्वल टू AD. BC ची व्हॅल्यू कितें AC साइन I. AD ची व्हॅल्यू कितें AC साइन R. AC आनी AC कितें जातले कॅन्सल जातले. सो साइन I ची व्हॅल्यू साइन I इक्वल टू कितें मेळटले साइन R. साइन कितें जातले कॅन्सल जातले. सो I इक्वल टू कितें R. सो I इक्वल टू R म्हणल्यार कितें एंगल ऑफ इन्सिडन्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड वन प्रूफ फॉर लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन युजिंग हायगन्स प्रिंसिपल. आम कितें प्रूफ करपा जाय μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R. आता लेट 1, 2 बी दी इन्सिडंट रेस. 1 आनी 2 कितें इन्सिडंट रेस. 1 डैश एंड 2 डैश कितें 1 डैश एंड 2 डैश कितें रिफ्लेक्टेड रेस. इफ v1 इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन्सिडंट रेसाची वेलोसिटी कितें v1 आनी रिफ्लेक्टेड रेसाची वेलोसिटी कितें v2. कळ्ळें. हे बरयला. t is the time taken by light to go from B to C or A to D. B to C वचपा लागून कितले टाइम लागता t टाइम लागता आनी A to D वचपा लागून कितले टाइम लागता t टाइम लागता. हो कितें मीडियम 1 आनी हो कितें मीडियम 2. मीडियम 1 चे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कितें μ1. मीडियम 2 चे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कितें μ2. हो कितें आसतलो रेरर मीडियम आनी हो कितें आसतलो डेन्सर मीडियम. सारकें. ताका लागून रेस ऑफ लाइट कितें जाता टुवर्ड्स दी नॉर्मल बँड जाता. आता सो मीडियम 1 कितें रेरर आनी मीडियम 2 कितें डेन्सर. सो हांव कितें बरोवंक शकता μ1 इज लेस दॅन μ2.
इफ mu1 is less than mu2 then v1 is greater than v2. सो v1 स्पीड चड आसा, v2 स्पीड कमी आसा सारखे. आता हो एंगल कितें आसतलो I, हो एंगल कितें आसतलो I, जाल्यार हो एंगल बी कितें आसतलो I. हो एंगल कितें R, जाल्यार हो एंगल कितें R. हो I जाल्यार हो I, हो R जाल्यार हो R. I कितें एंगल ऑफ इन्सिडन्स आनी R कितें एंगल ऑफ रिफ्रॅक्शन. आता फॉर दीस पॅरलल रेस ऑफ लायट वेवफ्रंट कितें आसतले AB. फॉर दीस पॅरलल रेस ऑफ लायट वेवफ्रंट कितें आसतले DC सारखे. सो AB कितें इन्सिडंट वेवफ्रंट कळ्ळें फॉर इन्सिडंट रेस ऑफ लायट. DC कितें रिफ्रॅक्टेड वेवफ्रंट. आनी वी नो आमकां खबर आसा स्पीड इक्वल टू कितें आसता डिस्टन्स अपॉन टायम. सो टायम इक्वल टू कितें आसतलें डिस्टन्स अपॉन स्पीड सारखे. आता फॉर इन्सिडंट रेस ऑफ लायट, फॉर इन्सिडंट रेस ऑफ लायट म्हाका सांग डिस्टन्स कितें BC आनी स्पीड कितें V1 कळ्ळें. फॉर रिफ्रॅक्टेड रेस ऑफ लायट डिस्टन्स कितें AD आनी स्पीड कितें V2. सो हो कितें आसतलो इक्वेशन 1 आनी हो कितें आसतलो इक्वेशन 2. आता आमी कितें करतले दोनी इक्वेशनां कितें करतले इक्वेट करतले. सो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो दोगी जाणां इक्वेट करून आमकां कितें मेळटलें BC अपॉन V1 इक्वल टू कितें AD अपॉन V2. हेका रिअरेंज करून कशें बरोवंक शकता BC अपॉन AD इक्वल टू V1 अपॉन V2. हो कितें आसतलो इक्वेशन 3. आता इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हो कितें आसतलो एडजसेंट. एंगल कितें आसतलें I, हो एंगल कितें आसतलो 90 डिग्री. हो कितें आसतलो एडजसेंट, हो कितें आसतलो अपोजिट आनी हो कितें आसतलो हायपोटेनियस. आनी आमकां खबर आसा साइन I कितें आसतलें हो एंगल साइन थीटा कितें आसता अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस सारखे. अपोजिट कोण BC, हायपोटेनियस कोण AC सारखे. आता AC हांगा वयतलो. सो BC ची व्हॅल्यू कितें मेळटलें आमकां AC साइन I. इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC म्हाका सांग एंगल कितें R न्हू. सो साइन R इक्वल टू हांव कितें बरयतलो अपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. अपोजिट कोण AD, हायपोटेनियस कोण AC सारखे. सो AC हांगा वयतलो. सो AD ची व्हॅल्यू कितें मेळटलें आमकां AC साइन R. फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कितें आशिल्लें BC अपॉन AD इक्वल टू V1 अपॉन V2 सारखे. BC ची व्हॅल्यू कितें AC साइन I, AD ची व्हॅल्यू कितें AC साइन R. BC ची व्हॅल्यू कितें AC साइन I, AD ची व्हॅल्यू कितें AC साइन R. आता V1 बाय V2 आता हांगा पळया आमकां खबर आसा वेलोसिटी कितें आसता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितें आसता म्यू. सो हांव कितें बरोवंक शकता V1 अपॉन V2 हांव कितें बरोवंक शकता mu2 अपॉन mu1. सो V1 अपॉन V2 जाग्यार हांव कितें बरयतलो mu2 अपॉन mu1. आता कितें जातलें AC आनी AC कितें जातलें कॅन्सल. सो आमकां कितें मेळटलें साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू mu2 अपॉन mu1. आता mu1 हांगा वयतलो कळ्ळें साइन R हांगा वयतलो. सो आमकां कितें मेळटलें mu1 साइन I इक्वल टू mu2 साइन R. होच कितें स्नेल्स लॉ.